दोस्तों आपने आज तक किंग खान यानी कि शाहरुख खान को अलग अलग जगहों पे देखा होगा, फिर चाहे वो आपके घर पे टीवी स्क्रीन हो, आपके फोन का स्क्रीन ऑन द गो, या फिर बड़े स्केल पे आपने जब मूवी देखते हुए झूमा होगा तो जरूर याद किया होगा शाहरुख खान को। बट यू नो व्हाट, टुडे इट्स स्पेशल बिकॉज आज हम जानने वाले हैं फिल्म के पीछे वाले रियल एसआरके को। गाइस वेलकम टू जूमिंग इन विद द रियल एसआरके। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू गौरव, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। क्या करना है? सर मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, आई मीन बेसिक क्वेश्चंस होंगे और फिर आप उसके जवाब देंगे और इजी रहेगा। गौरव लेट्स कीप इट रियल एंड श्योर, स्ट्रेट एकदम। ओके लेट्स स्टार्ट विद द इजी वन। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? यार आजकल तो मेरा दिल ये ब्लू पे आया हुआ है। ब्लू सर ब्लू कलर बहुत अच्छा है, मुझे भी इन पर काफी पसंद है। मूविंग अहेड, व्हाट इज एसआरके's फेवरेट एक्सेसरी? आई मीन आई नो द आंसर, I know it's watch, I mean because like the world knows your watch collection and everything, but what's your favorite accessory? थोड़ा मैं डिसर्निंग हूँ वॉचेस के बारे में, मेरा ऐसा कोई कलेक्शन वगैरह नहीं है। बट टू मी गुड वॉच इज यू नो इफ इट हैज एन एक्सक्लूसिव डिजाइन एंड द क्राफ्ट्समैनशिप that happens in a watch. So I get attracted to that and then I think they kind of look cool, so I feel very happy. So सुंदर watches तो मुझे भी पसंद है। दिखा जी बहुत अच्छी है। Oh, thank you. So moving ahead, is Shahrukh Khan a tea person or coffee person? ओके मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, जो लोगों को चाय पसंद है, मुझे लगता है चाय बहुत अच्छी है, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड आफ्टर दिल्ली सम इयर्स लेटर, बट आई एम नाउ अ कॉफी पर्सन, प्योर एब्सोल्यूट कॉफी ड्रिंकर। सर सह लेंगे थोड़ा सा, है ना? So okay, changing the topic, how would you explain your brilliance on screen? Sir, क्या इसके पीछे की कहानी है? What's the mantra? What's the secret? ऐसा कुछ नहीं है यार, आई मीन इट इज एज क्लीशेड एज सेइंग यू वर्क हार्ड, यू ट्राई एंड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मैं जब स्कूल में था तो ऐसा एक हम बैनर लेके घूमते थे। बट आई थिंक द सिंपलेस्ट थिंग फॉर एन एक्टर टू डू, और इफ वी आर इन द शो बिजनेस, वट एवर शो बिजनेस वी आर इन, आई थिंक रिलेटेबिलिटी, यू नो, आई ट्राई टू प्रेजेंट टू एवरीबडी द रियल मी। Oh, this is the best answer. सर जवाब सुन के मेरा मन कर रहा है कि I should present you a big coffee hamper. I mean वो है नहीं हमारे पास में, कॉफी से काम चल जाएगा? फिक्र मत कर, मैं अपनी कॉफी साथ में लेकर आया हूँ। है मेरे पास है। एक्चुअली मेरी कॉफी इज द realme 12 Pro series. Oh, so speaking of 12 Pro series, I mean it's here now. I have seen it, but you know what? It looks very similar to the old one. What's 11 your, Pro. Yeah, and what's your take? You may be right. Yeah, there's not much change that way. It can look similar to some people compared to the 11 Pro. But हर चीज़ जो जैसी दिखती है सेम दिखती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो अंदर से भी सेम हो। Yeah, so you have to have the experience. Things may look the same, but the experience is very different. And I did also like the design of 11 Pro. But मुझको ऐसा लगने लगा बीच में, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, not that I have the most knowledge, तू टेक्निकल गुरु है, बट मुझे लगा कि थोड़ा स्कोप था इम्प्रूवमेंट का 11 Pro सीरीज में। सो आई स्पोक टू द realme people and I एक सेकेंड gave them my 2 bits. So you gave your feedback to realme? Absolutely, जरूरी थोड़ा ना कि you have to be a technical guru to give a feedback. मैं शाहरुख खान हूँ, मेरी बहुत चलती है बेटा, तो मैंने उनको बताया और वो लोग थोड़ी बहुत उन्होंने मेरी बात मान भी ली। अदरवाइज हाउ डू यू थिंक ये जो डिज़ाइन है कैमरा का, which is inspired by the watch bezels, वो कैसे आया, and more than that the exquisite vegan leather, ये तो मेरे जैसा कोई क्लासी और कूल आदमी ही सजेस्ट कर सकता था। So and I do trust that the camera of the 11 Pro So was great. absolutely. So Gaurav, I think it's time to go beyond great, and this is why the new 12 Pro series offers a 50 megapixel Sony OIS camera, which allows you to take better and clearer pictures in day and night. Wow. And also it has a periscope portrait camera, Okay. which allows you to take portraits just like as if you're taking it from a DSLR camera. You know what, realme is just like you, sir. क्यों कैसे? Sir, they do the same things. I mean जो आप करते आए हैं आज तक, improving yourself, you know, year after year. पहले मैं गंदा था। नहीं सर, पहले ग्रेट थे ना, अभी ग्रेट से बढ़ के हो गए हैं। तो ऐसे बोलना, क्लियर रखा कर ना, टेक्निकल गुरु है तो हर चीज़ एकदम प्रॉपर बोलना चाहिए। मैंने कैसे बोला एकदम 50 मेगापिक्सल सोनी OIS कैमरा। तो सर शाहरुख खान used to be great before, now he is beyond great 55,000 megapixel OIS. with even better portraits. And at the same time, the best part is to keep it real. That's what realme is doing. Absolutely, they keep it absolutely real. So सर मुझे real से याद आया, we always talk about real and real, two separate things, two different things.
today in this age of social media, especially for the youth, I would want your advice that what's the perfect way to keep a balance so that they don't get confused in this mixed world of real and real. Yes, I do think it's a little difficult for people who are getting into show business now, because when I started, जब मैंने शुरुआत की तो nobody knew too much what happens behind the scenes, कैसे presentation होती है. पहले हमने काम किया, अच्छा काम किया, बुरा काम किया, struggle किया, सबने मेहनत की. You became a star, and then you were covered by media. Maybe, a big thing to be on a cover of a magazine or a newspaper if you got like the best actor award. अभी क्या हो गया है कि so much is being talked about on social media. Everybody has so much access to it. तुम्हारे पास, मेरे पास, बच्चों के पास, youngsters have it. I think somewhere the pressure of validation from people that we don't even know, वो आने लगता है. हम ये जानने से पहले कि हम ठीक हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ख़राब हैं, आई थिंक हमको ये पहले पता करना है कि यार वो क्या कह रहे हैं, अरे उस पर क्या लिखा है, लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक वरी देम अ लॉट. आई थिंक द बड़ी सिंपल एडवाइस है, बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगी अंडरस्टैंड करना, बट आई कीप इट सिंपल एंड आई कीप इट रियल. आई थिंक किड्स हैव टू डिसाइड कि हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है. एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एक्सप्रेस करना है एंड गेट द बेस्ट एक्सप्रेशन आउट. द इम्प्रेशंस विल फॉलो. यू डोंट हैव टू डू इट द अदर वे कि इम्प्रेशंस को देखकर अपने एक्सप्रेशंस चेंज करो. Sir, you know what? I might be, I don't know, 1000th or lakh person, saying in front of you, but definitely कुछ होता है. I mean, आप नहीं समझेंगे. थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगा टेक्निकल गुरुजी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है. अनबॉक्सिंग ऑफ द realme 12 Pro series. Let's do it. तो चलिए शुरू करते हैं. सर पहले मैं. Okay. Okay, so this is the all-new Realme 12 Pro Plus 5G. If you can see, the camera is all inspired from luxury watches. The back is again very improved vegan leather. The phone packs a lot, and the camera is really special because the main camera what we have is a 50 megapixel Sony camera with OIS for amazing shots. It's the IMX 890 sensor. Then we have an ultra-wide camera of 112 degrees to capture everything you can see, and for amazing portraits, we have a 64 megapixels periscope portrait camera. So the camera is really fantastic, and also for selfies. If you want to click selfies, 32 megapixels of Sony camera. Inside what we have is this, a curved vision screen. This is an AMOLED screen, and powering inside we have a Snapdragon 7S Gen 2. So incredible performance. Battery के लिए sir, it's a 5000 mAh battery, and the charging is 67 watts super VOOC charging. And the phone is running on Realme UI 5.0 based on latest Android 14. बहुत मेहनत की गौरव, लेकिन मेरे सब सिर के ऊपर से गए. चलिए फिर से शुरू करते हैं. Luxury watch inspired design. Camera means a camera that not only takes great pictures but also looks really great and cool. Processor है super fast, मतलब कोई भी lag नहीं आएगा. Periscope portrait camera means objects in the viewfinder are closer than they appear. OIS मतलब वीडियो होगा smooth और low light में भी फोटो होगी clear. Okay guys, meet the mighty portrait master. So, you know what? This phone is just looking like a wow. सर एक सेल्फी ले लें. ठीक है, तो इतना बोल रहा है मुझको तो मैं ले लेता हूँ. नेक्स्ट टाइम जब शो करो थोड़ा सिंप्लीफाई टेक्निकली बताना, जैसे मैंने तुझे बताया. आजा पास आजा मेरे. ये ले, स्माइल कर, थोड़ा खुश लग. वेरी गुड, नाइस. चेक कर ले. हाँ प्लीज. सर पीछे बोल रहे हैं आपको वहाँ पे शॉट हुई. हाँ वो दूसरा शॉट भी है ना मेरा. I'll just finish this. या गौरव, फोन तो दे, शूटिंग कैसे करेंगे? सर आज के लिए चाय पी लो आप. यार ये रियलमी वाले लोग इंटरव्यू के चक्कर में चोरी करवाए.